morning children. Welcome again here in this video tutorial. Myself Renu Kanyal, and today we'll continue with the chapter number 4, that is multiplication. As we know that we are doing revision nowadays. So multiplication sums we have done earlier. In previous video tutorial classes we had already done multiplication sums. So now today we'll do some more multiplication sums and word problems, okay, based on multiplication. Fine everyone? So here we have some question. Just look at the question number 4. Sometimes we have that kind of question in multiplication. So आप इसे देखिए और ध्यान से read कीजिए. This is page number 54. Take out your book also and exercise 4th B. Okay, and page number 54. Just look at the question number 4. There are 275 balloons in a pack. Fine. How many balloons are there in 2 dozen such packs? Okay, इतना तो आपको समझ में आ रहा है. There are 275 balloons in a pack. एक पैकेट है. जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो बैलून्स के पैकेट परचेज करते हो ना. हाँ, तो उसमें आपके बैलून्स होते हैं. तो इस पैकेट में भी आपके 275 बैलून्स हैं. फाइन. ओके, हाउ मेनी बैलून्स आर देयर इन 2 डजन सच पैक्स. अब आपको 2 डजन के फाइंड आउट करने हैं. बैलून्स की 2 डजन में आपके कितने बैलून्स होंगे. Sometimes some children do the same mistakes. Sometimes कुछ बच्चे जो होते हैं सेम गलतियाँ करते हैं बार बार. Done the same mistakes. What? यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि there are 275 balloons in a pack. इतना तो समझ में आ गया. उसके बाद वो करते हैं कि इन 2 डजन में वो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट. सो स्टेटमेंट के साथ हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर. दिस इज़ एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4. सो विल राइट फर्स्ट सॉल्यूशन. Fine. So in first statement we'll write here number of balloons. Number of balloons is equal to 275. Now what we have to find out? How many balloons there in 2 dozens. We know that 1 dozen is equal to 12. 1 dozen is equal to 12. कभी कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हो तो वहाँ पर आपकी मम्मा जब बनाना परचेज़ करती हैं, बनानास, ओके, जब बनानास परचेज़ करती हैं तो क्या बोलती हैं? भैया 1 डजन बनाना दे दीजिए, 2 डजन बनाना दे दीजिए, बोलती है ना. हाँ, तो 1 डजन में आपके कितने बनानास आते हैं? यस, 12. तो 12 आते हैं. सो वी हैव 2 dozen. Okay, so it means 12 multiplied by 2 is equal to 24. Now what we'll do? We'll just multiply 24 by 275, and the statement is how many balloons are there in 2 dozen such packs. Balloons in 2 dozens. Number of balloons in 2 dozen is equal to 275 multiplied by 24. Now we'll write it in the column 275 multiplied by 24. Okay, start reciting table. हम first ones place से start करेंगे. 4 5s are 20, 2 carry over here. 4 7s are 28, 29 30, 3 carry over here.
4 2s are 8 plus 3 9 10 11. So we have here 11 1100. So now in the next line, because 2 is in 20 means टेंस प्लेस, आपका जो 2 है वो टेंस प्लेस में है, तो नेक्स्ट लाइन में हम इसे सॉल्व करेंगे. सो विल राइट हियर बिकॉज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20. जो आपका 2 है, देखो वंस टेंस, तो 2 की प्लेस वैल्यू 20 है. सो 20 में आपके कितने ज़ीरो हैं? 1 0. और वंस की प्लेस में है, कौन सी प्लेस में है? वंस. तो हम यहाँ पर वंस, दिस इज़ वंस प्लेस. ओके, वंस कॉलम है ये, तो इसी वंस के कॉलम में हम 1 0 पुट करेंगे. फाइन. नाउ वी हैव योर 2. जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ 2. 2 5 टाइम्स मीन्स 2 5s are 10, 1 carry. 2 7s are 14 plus 1 15. So we'll write here only 5 and 1 carry over here. 2 2s are 4 plus 1 5. Fine everyone. Now what we'll do? We'll just add both the numbers. 0 plus 0, 0, 0 plus 0, 0, 5 plus 1, 6, 5 plus 1, 6. How interesting it is. 1100, 5500, 6600. ओके, तो हमारे 2 डजन पैक में कितने बैलून्स पैक हो जाएंगे? आ जाएंगे 6600. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे 10. देयर आर 6600 balloons in 2 dozen such packets. Okay, such packs. Fine everyone. अब आपको पता चल गया ना इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. आपको लर्न करना है 1 डजन में कितने होते हैं, 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 1 वीक में कितने, 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं. क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बार बार. आपको पूरा नंबर नहीं दिया जाता है, आपको कुछ ही नंबर दिए जाते हैं. तो आपको अगर लर्न होगा तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाओगे. ओके, सो लेट्स सी. ओके students, we have another problem here. Look at the question number 5. A bakery bakes 1123 loaves of bread in a day. Okay, here a bakery bakes 1123 loaves of bread in a day. How many loaves of bread will the bakery bake in 6 weeks? हमको 1 डे का दिया है. फाइन. बेकरी में बेक्स होते हैं ब्रेड के लोव्स, जो ब्रेड के स्लाइस आप पीसेस लेते हो ना, खाते हो, वो एक बेकरी में एक दिन में 1123 बनाए जाते हैं. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड आउट कि 6 वीक्स में हाउ मैनी लोव्स विल बी प्रिपेयर्ड. 6 वीक्स में कितने बन जाएंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी जस्ट फाइंड आउट द नंबर्स इन 6 वीक्स. 6 वीक्स में हम लोग निकालेंगे कितने डेज़ होते हैं, क्योंकि 1 डे का हमको पूछाया गया है. ठीक है, 1 डे का दिया है हमें, तो यहाँ पर 6 वीक्स में मेंशन किया है. सो इन द सॉल्यूशन विल राइट हियर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. So we'll write in our solution, this is question number 5. Our first statement is a bakery
bakes loaves of bread in a day is equal to 1123. Okay. Now what the question saying, how many loaves of bread will the bakery bakes in 6 weeks? In 6 weeks, loaves of bread will bake in 6 weeks. Loaves of bread will bake is equal to 1, 1, 2, 3 multiply 42. Okay, now tell me where we get this number. हमको 42 कहाँ से मिला? यहाँ पर हमने 42 लिखा है, बट 42 कहाँ से आया? बिकॉज यहाँ तो 6 वीक मेंशन किया है. ये तो फाइन, ये तो हमने लिखा है यहाँ पर 1123 फाइन. ये तो हमने एग्जैक्ट जो नंबर हमें दिया है वो ही हमने लिखा है. बट यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमने नंबर 6 लिखा हुआ है, 6 वीक्स इन 6 वीक्स लोव्स ऑफ ब्रेड विल बेक. इसमें हमारे कितने बनेंगे? तो 6 वीक्स का हमको फाइंड आउट करना है. तो हमने 42 कैसे लिखा है यहाँ पर? बिकॉज क्योंकि 1 week is equal to 7 days. Okay, so 6 weeks is equal to 6 multiplied by 7 is equal to 42 days. Fine everyone? So that's why we have written here 42. Now we'll write both the numbers in multiplication column here. 1, 1, 2, 3 multiplied by 42. Now we'll multiply the number. Ones place we have here 2 and 3. So recite the table of 2 for 3. 2 3s are 6. 2 2s are 4. 2 1s are 2. 2 1s are 2. So first line it is solved. Now in the next line we have here 4. So again earlier we have solved. Just tell me the place value of 4 is 40. So which digit is in the unit place? Ones place में हमारी इन दोनों में से कौन सा डिजिट है? 4 और 0 2 डिजिट का एक नंबर है ना ये? 0. 0 is in ones place. So we'll write here 0. Now recite the table of 4. 4 3s are 12. We'll write here 1. 4 2s are 8 plus 1 9. 4 1s are 4. 4 1s are 4. Fine everyone? Now we'll add both the numbers. 6 plus 0 6. 4 plus 2 6. 9 plus 2 11. 1 carry. 2 plus 1 3. 3 plus 4 7. And 4 we'll write as it is because no number is here. Okay. So how many loaves of bread will bake? 4 ones, tens, 100, 1000, 10,000. 47,166. Fine everyone? So in the last statement we'll write here, thus in 6 weeks 47,166 loaves of bread will bake will bake
by in the bakery. Will bake in the bakery. Fine. Thus, in 6 weeks, 47,166 loaves of bread will bake in the bakery. Fine, everyone? Like this, you will solve your worksheet. Just remember one thing. You have learned the days in a week, the days in a month, the days in a year, the months in a year. Okay, units, ग्रॉसरी आपको ये लर्न करना है, तभी आप मल्टीप्लिकेशन सम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग, जस्ट लर्न द टेबल ऑल्सो. आपको प्रैक्टिस करनी है. रोज़ मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ. विदाउट लर्निंग द टेबल यू कांट डू मल्टीप्लिकेशन ईजीली. आप लोग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हो. एटलीस्ट 2 to 10 तो सभी बच्चों को आने चाहिए ताकि आप मल्टीप्लिकेशन वे में सॉल्व कर सको. बट जब कैलकुलेशन आपको फास्ट तरीके से सॉल्व करनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई आना, टेबल्स आने बहुत ज़रूरी हैं. ओके, सो डू प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग एंड राइटिंग टेबल्स ऑल्सो, एंड डू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स. सो चिल्ड्रन, next we will revise and composite numbers. So look at here, what are prime numbers? A prime number is a natural number greater than 1 which has only two different factors, namely 1 and the number itself. So first tell me, what are natural numbers? Natural numbers are the counting numbers which are started from 1 2 3. 1 से start होते हैं. Okay, जो natural numbers means जो आपको nature में दिखाई देते हैं. नेचर्स आपके सराउंडिंग में, आपको 1 भी दिखाई देता है, 2 भी. अब आप बोलेंगे 1 क्या दिखाई देता है? सपोज टू बी आप 1 हाउस देख सकते हो, 1 ट्री देख सकते हो, 1 एप्पल ट्री, 2 एप्पल ट्री भी देख सकते हो. मीन्स इन्हें आप काउंट कर सकते हो. तो आप जब भी बाहर निकलते हो तो आपको 1 रोज़ प्लांट भी दिख सकता है, 2 भी दिख सकता है, 3 भी. आप जैसे ईजिली काउंट करते हो. तो काउंटिंग तो आप 1 से स्टार्ट करते हो ना. सो दीज आर दी नेचुरल नंबर्स. एंड नेक्स्ट इज होल नंबर्स. द नेचुरल नंबर्स along with 0 मीन्स जो आपके नेचुरल नंबर्स जिनके साथ 0 भी इंक्लूड होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 0 1 2 3 4, दीज आर दी होल नंबर्स. फाइन. सो नाउ कम टू द प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1. नेचुरल नंबर्स होते हैं ग्रेटर देन 1 से बड़े होते हैं, which has only 2 factors which we have revised earlier. Yesterday we have also revised the factors. What are factors? When we multiplied any two numbers, we get a product, and these two numbers are the factors. And in other way, when a number divides another number exactly, जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो जो पहला नंबर होता है वो फैक्टर होता है उस नंबर का. ओके, सपोज लेट मी एक्सप्लेन इट हियर. सपोज आई एम 8 divided by 2 4 times. Okay, 2 4s are 8. Here I am writing it like this. 2 4s are 8. So 8 minus 8 is 0. The remainder is 0 and the quotient is 4. So this is the factor. ये आपका factor है. Fine. So when a number divides another number completely means remainder आपका 0 होना चाहिए. Fine. तो जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को completely डिवाइड करता है, this number is known as the factor. So we are talking about the prime numbers. So prime numbers are numbers which have only 2 factors, like if we multiply 2 by 1 we'll get 2. If we multiply 3 by 1 we'll get 3. If we multiply 5 by 1 we'll get 5. 17 by 1 we'll get 17. Means prime numbers which have only 2 factors greater than 1 and number itself. means जो
1 greater than 1. So here 2, 3, 5 and 17 all are greater than 1. Okay, these all numbers are greater than 1. So these are prime numbers. These are natural numbers also, natural numbers starting from 1 but greater than 1. ये 1 से बड़े होते हैं and इनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं. We can say that जो नंबर्स ओनली अपनी टेबल में आते हैं, अपनी ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 केवल अपनी ही टेबल में आता है, लाइक 2 1s are 2. वैसे ही 5 3 5 17 11 13 ये सारे नंबर्स अपनी ही टेबल में आते हैं. ठीक है, अपनी से ही डिविजिबल होते हैं, अदरवाइज 1 से डिविजिबल होते हैं. दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स. एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? बिकॉज प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं. 2 3 5 11 17 13. So which is the smallest prime number? 2. 2 is smallest prime number and 1 is not neither a prime number and not a composite number. जो 1 है वो ना ही हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है. So look into the composite number. What are composite number? Composite numbers have more than 2 factors. Suppose we have a number here that is 12. If we'll take its factor, multiplication method में हम इसके factors find out करेंगे. So we'll just multiply. 1 multiplied by 2 is equal to, 1 multiplied by 12 is equal to 12. 2 multiplied by 6 is equal to 12. 3 multiplied by 4 is equal to 12. 4 multiplied by 3 is equal to 12. So now we'll stop. Why we'll stop here? Because the order of the number are changed. As earlier I have also told you that if we change the order of the numbers, that time we just stop the multiplication method. वहाँ पर हम रुक जाएंगे factors find out करने के लिए. So how many factors are there? Just take U-turn. यहाँ से हम अगर ascending order में लिखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 6 and 12. These all are factors of 12. So here look at here, how many factors? 1 2 3 4 5 6. 6 factors. It means that 12 is a composite number. Okay, and these all are prime number. ये सारे prime numbers हैं और 12 composite number है, like 6 4 8. ये सारे कंपोजिट नंबर है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. मीन्स जो अपनी टेबल में तो आते ही हैं और अदर्स जो नंबर्स होते हैं उनकी भी टेबल में आते हैं. ओके, सो विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2 is the smallest prime number. And which is the smallest composite number? 4 is the smallest composite number. Fine. 1 neither a prime and nor a composite number. 1 ना ही हम लोग प्राइम नंबर में काउंट करते हैं क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स नहीं बनते, और कंपोजिट नंबर क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स, जब उसके 2 फैक्टर्स नहीं बनते तो ज़्यादा कहाँ से बनेंगे. सो 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कंपोजिट नंबर. फाइन एवरीवन. So students, let's revise prime factorization by factor tree method. अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर 3 मेथड से करेंगे, रिवाइज करेंगे. ओके, व्हेन आई गिवन यू दिस एक्सरसाइज रिलेटेड दिस क्वेश्चन, सम ऑफ द स्टूडेंट डन रॉन्ग. कुछ बच्चों ने इसे रॉन्ग किया था. अब आप ध्यान से देखिए, वीडियो सारे बच्चे देखेंगे बिकॉज योर एग्जाम्स आर कमिंग सून. अब तो नेक्स्ट ये कमिंग वीक में आपके एग्ज़ाम्स हैं. दिस इज़ सपोज आर लास्ट ट्यूटोरियल क्लास बिफोर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. ये हमारी शायद हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की लास्ट क्लास है. उसके बाद जब नेक्स्ट एग्ज़ाम्स ओवर हो जाएंगे आपके, तो हमारी न्यू क्लासेस एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. फाइन, सो वॉच द वीडियो केयरफुली. एंड इससे रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारा रिवाइज कराया जा रहा है. जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से एग्ज़ाम्स में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. So here prime factorization by factor tree method. So let's take a number. चलो हम एक नंबर ले लेते हैं, that is
36. सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 24 ले लेते हैं. फैक्टर ट्री, एज अर्लियर आई टोल्ड यू वी हैव टू मेक अ ट्री. हमने 24 का एक ट्री बनाएंगे हम. फाइन. अब हम इसकी ब्रांचेस निकालेंगे. 24 है, 24 की हमने 2 ब्रांचेस ले ली. आप मुझे बताइए कि 24 किस किस की टेबल में आता है. वी हैव टू फाइंड आउट ओनली फैक्टर, और हम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम नंबर्स से. हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा वो हमारे, जो हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारे प्राइम नंबर्स ही हमें मिलने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट टेल मी 24 किसकी टेबल में आता है. ओके, 24 आता है आपका 3 की टेबल में. 2 की टेबल में आता है. यस, 2 की टेबल में तो आता है, बट आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा. जस्ट रिसाइड द टेबल ऑफ 3. 3 8s are 24. So here we'll write 3 and here 8. 3 8s are 24. Look at here, इसकी 2 branches आ गई हैं. One is 3 and one is 8. So अब हमारी 3 की भी branches बनाएंगे हम? No, because क्यों नहीं बनाएंगे? बिकॉज इट्स अ प्राइम नंबर. सो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो जो जो हमारा प्राइम नंबर होगा उसकी हम ब्रांचेस नहीं बनाएंगे. ओके, दिस इज प्राइम नंबर, सो विल नॉट मेक ब्रांच ऑफ दिस नंबर. दिस इज कंपोजिट नंबर. दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. ओके, सो कंपोजिट नंबर की हमारी और ब्रांच बनेगी, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमें ओनली प्राइम नंबर चाहिए. मीन्स हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमें ऐसे नंबर, जब तक हमारा ऐसा नंबर ना मिल जाए जो किसी की टेबल में नहीं आता. मीन्स 3 किसी की भी टेबल में नहीं आता, ओनली अपनी टेबल में आता है. 3 1s are 3. सो 8 किसकी टेबल में आता है? टेल मी. 2 2 4s are 8. ओके, नाउ अगेन विल स्टॉप हियर. 2 की हमारी ब्रांचेस नहीं बनेंगी बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर एंड दिस इज अ कंपोजिट नंबर. तो इसकी ब्रांचेस बन जाएंगी हमारी लाइक 2 2s are 4. फाइन एवरीवन, बन गई ना हमारी ब्रांचेस. दिस इज प्राइम नंबर एंड दिस इज कंपोजिट, दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. फाइन. ये जब तक हमें कंपोजिट नंबर मिलते रहते हैं हम उनकी ब्रांचेस बनाते रहते हैं, और उसके बाद फाइनली हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई में हम ओनली उन नंबर्स को लेंगे जो ओनली प्राइम नंबर्स हैं. सो फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स ऑफ द फैक्टर ट्री. इस फैक्टर ट्री में प्राइम नंबर्स बताइए आप. यस, 3 multiplied 2 multiplied by 2 multiplied by 2. These all are prime numbers. Now multiplied 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 2s are 24. So here it is 24 24. It means that our prime numbers, our factor tree is absolutely correct. हमारा जो factor tree हमने बनाया है बिल्कुल ठीक है. Okay? Now take another example. Here we have another example that is 36. Now we'll make its branches. हम इसकी फिर से branches बनाएंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हमें प्राइम नंबर चाहिए. अब आप बताइए 36 किस किस की टेबल में आता है. आप लोग भी नोटबुक में सॉल्व कर रहे हैं ना, इसे आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे. सो जस्ट टेक 2 ब्रांचेस फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड. अब आप ये बताइए 36 किसकी टेबल में आता है. 36 6 2 की आता है, 3 की आता है, 4 की आता है. यस, 2 की आता है, बट आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा. 3 4, यस, 4 9s are 36. 4 9s are 36. So here we have, this is composite number, this is also composite number and composite number.
बट वी हैव टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स. हमको फैक्टर ट्री बनाना है तो हमारे एंड में प्राइम नंबर्स ही हमें मिलने चाहिए. ओके, दिस इज़ कंपोजिट नंबर, सो इसकी भी हमें 2 ब्रांचेस मिल जाएंगी. एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, सो इसकी भी हमें 2 ब्रांचेस मिल जाएंगी. नाउ 2 branches, I'll make it here. Okay, now take 2 another numbers, should be prime. These numbers should be prime होने चाहिए. 4 किसकी टेबल में आता है आप बताइए मुझे. yes, 2 की टेबल में आता है. 2 multiplied by 2, 2 2s are 4, like this. 9, 3 multiplied by 3, 3 3s are 9. Here 4 9s are 36, 2 2s are 4 and 3 3s are 9. So these all are prime numbers. अब हमें सारे प्राइम नंबर्स मिल गए हैं. प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर and prime number. These all are prime numbers. Now calculate it. 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. It means our factor tree is right. 36 and 36. Like this, you have to solve your factor tree by prime factorization method. आपको इस तरीके से prime factorization के method के थ्रू आपको अपना factor tree solve करना है. Okay? Now, earlier I told you that this is our last tutorial class before the half-yearly examination. So, all the best for your exams. Hope you will do your exams very well and very good. So keep doing practice to solve the math sums and do lots of practice. Okay, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, टेबल लर्न कीजिए. जितना आपका सिलेबस में आपको वर्क कराया है, जितने आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनका रिवीजन कीजिए. फाइन एवरीवन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.